Hello there. Dear friends of class 12 all over the country under CBSE, I would welcome you all to this smart study time on ABC News agtlive. Today's area of study is poetry, and the name of the poem is My Mother at 66, which is composed by the eminent poetess KAMALA. And before we jump into the poem, let's gather some knowledge about this eminent Indian poetess KAMALA, and I'm sure you all are equally eager to explore her. I'd like to show you the image of the eminent poetess KAMALA. She is KAMALA. You know, many eminent poets or poetess have their nickname. For example, the world-famous poet and the first Nobel laureate from India, Rabindranath Tagore's nickname is Banu Singha. Likewise, KAMALA's nickname is Madhavi Kuti, her Muslim name Kamala Suraya. She was born on 31st March 1934 at Thrissur, Malabar coast, now in Kerala. She is recognized as one of India's foremost poetess. Her works are well known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Dash was born into a high-status family. Her mother, Nalaput Balamani Amma, was a well-known poet, and her father, V.M. Nair, was an automobile company executive and a journalist. She grew up in what is now Kerala and in Calcutta, where her father worked. She began writing poetry when she was a child. When she was 15 years old, she married Madhav Dash, a banking executive many years her senior, and they moved to Mumbai. Dash had 3 sons and did her writing at night. And Dash's poetry collections, including Summer in Calcutta in 1965, The Descendants in 1967, and The Old Playhouse and Other Poems in 1973. The subsequent English language works included the novel Alphabet of Lust in 1976 and the short stories A Doll for the Child Prostitute in 1977 and Padmavati the Harlot in 1992. Notable among her many Malayalam works were the short story collection Tanupu in 1967, Cold, and the memoir Balaya Kalash Maranak Al in 1987, Memoirs of Childhood. Perhaps her best-known work was an autobiography which first appeared as a series of columns in the weekly Malayalam Hindu, and then in Malayalam as Antikata in 1973, and finally in English as My Story in 1976, a shockingly intimate work. It came to be regarded as a classic. In later life, it does say that parts of the book were fictional. In 1999, she controversially converted to Islam, renaming herself Kamala Suraya. She received many literary awards, including the Asian World Prize for Literature in 1985. Kamala Dash is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. Alright, dear friends, let's now read out the poem loudly, with precise pronunciation of each and every word, followed by the meaning of the same. My Mother at 66 is composed by KAMALA Dash. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Alright, let's check out a few word meanings and pronunciation now. The first word as it goes, I would like to make you understand is my. So my, of or belonging to the poetess KAMALA.
in Bangla Amar अर्थात कवि कमला दासेर माँ, हिंदी में मेरी यानी कवि कमला दास की माँ. Next, mother. Here is a noun. Here the meaning is the female parent of the poetess Kamala Dash. Bangla माँ, हिंदी में माँ. Next, at. It's a preposition and it's used here to state the age of at which somebody does something. Next, 66. In English, 66. बांग्ला 66 বছর বয়স, हिंदी 66 साल की उम्र में. Driving, operating a vehicle so that it goes to a particular direction. बांग्ला কোনো এক নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে গাড়ি চালানো, हिंदी किसी एक पूर्वस्थित जगह की ओर गड्डी को चलाना. Parents, usually plural, here the poetess father or mother. बांग्ला माता पिता, हिंदी में माता पिता. Home, the house or flat or apartment where somebody lives, especially with his or her family. बांग्ला बाड़ी, हिंदी में घर कहते हैं. To is a preposition in the direction of something. बांग्ला दिके, हिंदी में इस तरफ और उस तरफ. Coaching. Kochi is also known as a Cochin in Kerala, which is a major port city on the southwest coast of India, bordering the Laccadive Sea in a part of the Arabian Sea. Bangla, Kochi, যা কোচিন হিসেবে আমরা জানি, যা ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে केरलाয় অবস্থিত. कोचिन जो कोची के नाम से भी जाना जाते हैं, ये भारत की दक्षिण पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र केरला में अवस्थित जो लक्षद्वीप सागरों को घेर के रखा है, जो अरब सागर की एक हिस्सा है. Last is a determiner and the most recent. बांग्ला गतो, हिंदी में पिछले. Friday or Friday is a noun, a day of the week before Saturday and after Thursday. बांग्ला शुक्रवार, हिंदी में शुक्रवार कहते हैं. Morning, the only part of the day from the time when people wake up until midday or before lunch. बांग्ला शकाल, हिंदी में सुबह. Here is the poetess Kamala Dash Hassel. बांग्ला आमी एखाने कवि कमला दास निजे, हिंदी में मैं कवि कमला दास खुद. So, is the past tense of see, became aware of something by using the eyes. बांग्ला देखेছিলেন, हिंदी में देखी थी. Beside is a preposition next to or at the side of something. बांग्ला पाशे, हिंदी में हम बोलते हैं बगल में. Doze, to sleep lightly for a short time. बांग्ला আমরা বলি झुमनी, हिंदी में झपकी लेना. Open-mouthed is an adjective with the mouth open because you are surprised or shocked. बांग्ला আমরা বলি খোলা মুখে, हिंदी में बोलते हैं खुली मुंह में. Ha, mother of the poetess. बांग्ला कवि कमला दासेर माँ, हिंदी में बोलते हैं कवि कमला दास जी का माँ. हिंदी में बोलते हैं कवि कमला दास की माँ. Face, the front part of the head between the forehead and the chin. बांग्ला चेहरा, हिंदी में बोलते हैं चेहरा. Passion,
is an adjective usually of somebody's face, very pale or without color because of illness or fear. বাংলায় ফ্যাকাশে বা বিবর্ণ, হিন্দি में पीला. Corpse is a noun, dead body, especially of a human. बांग्लाয় मानव शव, हिंदी में बोलते हैं शव বা লাশ या लाश. Realized is a past tense of the verb realize, understood or become aware of a particular situation. बांग्लाয় আমরা বলি অনুধাবন করেছিলেন, हिंदी में बोलते हैं समझा था. Pain is a noun, the feelings that you have in your body when you have been hurt or when you are ill. बांग्लाয় ব্যথা, हिंदी में बोलते हैं दर्द. Old is an adjective having lived for a long time. बांग्लाয় पुरानो, हिंदी में पुरानी. Soon is an adverb in a short time from now. बांग्लाয় शीघ्रई, हिंदी में हम बोलते हैं तुरंत. Thought is a noun, something that you think of or remember. बांग्लाয় আমরা বলি भावना, हिंदी में विचार. Away, to a different place or a different direction. बांग्लाয় अन्य कोनो एक दिशा, हिंदी में हम बोलते हैं कोई और एक दिशा में. Looked out is a past tense of the verb look, observed. बांग्लाয় देखते छिलो, हिंदी में बोलते हैं देखने लगी. Young trees, repeat, young trees. Youthful trees, बांग्लाয় छोटो गाछगुलो, हिंदी में बोलते हैं छोटे पेड़ों. Sprinting is a noun, a race in which the people taking part run, swim, etc. very fast over a short distance, a 100-meter short sprint, we say. In the textbook is mentioned here short fast race. बांग्लाয় खूब द्रुत दौड़ाना, हिंदी में बहुत तेजी से दौड़ना. बांग्लाয় অল্প দূরত্বে खूब द्रुत दौड़ाना, हिंदी में तेज गति से दौड़ते हुए वो भी हम बोल सकते हैं. Merry is an adjective, happy and cheerful. बांग्लाয় অত্যন্ত খুশি, हिंदी में अति प्रसन्न. Spilling out is coming out quickly in large number. बांग्लाয় দ্রুত অনেক সংখ্যায় बाहिरे बेरिए आशा, हिंदी में बड़ी संख्या में बाहर आते हुए. Airport, noun, a place where planes land and take off and that has buildings for passengers. बांग्लाয় विमानबंदर, हिंदी में हम बोलते हैं हवाई अड्डे. Security check, an examination for making the passenger and the goods acceptable to be carried in plane. बांग्लाয় सुरक्षा संक्रांत परीक्षा, हिंदी में सुरक्षा संबंधित जांच. Yards, an unit for measuring length equal to 3 feet. बांग्लाয় 3 फुट दूरत्व, हिंदी में कुछ गज. One, adjective, looking pale and weak. In textbook it's given colorless. বাংলায় আমরা যাকে বলি হালকা হলদে রঙের. Pale, of a person or their face etc. having skin that is almost white because of illness or strong emotion etc. बांग्लाয় विवर्ण, हिंदी में हल्के पीले रंग का. Winters, the coldest season of the year between autumn, fall and spring. बांग्लाয় शीतेर समय, हिंदी में शीत ऋतु के. Moon, the round object that moves around the earth once every
27 and a half days and shines at night by light reflected from the sun. बांग्लाয় चांद, हिंदी में चांद कहते हैं. Felt, in the past tense of the verb feel, experienced a particular feeling or emotion. बांग्लाয় अनुभव करेছিল, हिंदी में महसूस किया था. Familiar, adjective, well known to you. बांग्लाয় পরিচিত, হিন্দি में भांति. Ache is a noun, a continuous feeling of pain in a part of the body. बांग्लाয় पीड़ा বা বেদনা, हिंदी में पीड़ा या दर्द हम कहते हैं. Childhoods, of the period of child. बांग्लाয় শৈশব, हिंदी में बचपन. Fear is a noun, the bad feeling that you have when you are in danger, when something bad might happen. बांग्ला भय, हिंदी में डर कहते हैं. Smile, the expression that you have on your face when you are happy, amused, etc., in which the corners of your mouth turn upward. Bangla. Detailed analysis of the poem. Here, the poetess Kamala Das relates a personal experience. She brings out a common paradox of human relationships. A paradox means a situation that has two opposite features and therefore it seems strange. Right, so sometimes we do feel deep sympathy for someone, but we fail to express it in a proper manner. The poetess Kamala Das was driving from her parents' home to the Cochin airport the previous Friday morning to catch a flight. She was accompanied by her mother just beside her seat. The 66-year-old mother was soon gripped up by drowsiness with a wide open mouth. Her face looked pale and ash color like a dead human being. The poetess became panicky. She conjectured that her mother's death was imminent. She tried to overcome her fear. She looked out of the window. The young trees appeared to be running back at full speed. She also saw cheerful children coming out of their homes. They were in sharp contrast to her own aged mother. They reached the airport and passed through the formal security check. From the distance of a few yards, she looked at her mother again. The mother was weak and pale like the moon in late winter night. The sight of her revived the narrator's old childhood fear of being away from her mother. There was no hope of improvement in her condition. But before bidding her farewell, the poetess just smiled and expressed a hope to see her again. তাহলে বন্ধুরা এবার বাংলায় কবিতাটি আমরা বুঝতে চেষ্টা করব. কবি কমলা দাস মাই মাদার ইজ 66 অর্থাৎ 66 বছর বয়সে আমার মা শীর্ষক কবিতায় ওনার একটি নিজস্ব অনুভূতির কথা বর্ণনা করেছেন. এই কবিতার মাধ্যমে আমাদের মানবিক পরস্পর বিরোধী ভাবা ব্যক্তিকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন. কখনো কখনো আমরা কারো প্রতি গভীর সমবেদনা দেখাতে চাই, কিন্তু সেই ভাবনাটাকে যথার্থভাবে ব্যক্ত হয়তো আমরা করতে পারি না. এই কবিতায় সময়টা ছিল কোনো এক শুক্রবারের সকাল. কবি কমলা দাস ওনার মা বাবার বাড়ি থেকে কোচিনের বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিলেন. কবির মা কবির সাথেই ওই একই গাড়ির পাশের সিটেই বসা ছিলেন. ওনার মার বয়স তখন 66 বছর. তখন কবি তার মার প্রতি এক নজর ঘুরে দেখছিলেন. দেখলেন যে উনি তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল আর উনার মুখটাও অনেকটাই খোলা, যেমন অনেকটা এরকম. ওনার চেহারাও ঠিক যেন এক মৃত ব্যক্তির মতোই ফ্যাকাশে ছিল. কবির মা আর হয়তো বেশি দিন বাঁচবেন না,
এরকম ভাবনা কবিকে খুবই কষ্ট দিল। সে যাই হোক, অতি দ্রুত কবি এরকম খেয়াল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। কবির নজর পড়ল রাস্তার পাশে সেই ছোট ছোট গাছগুলোর উপর, যেগুলো মনে হচ্ছিল খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছে। কবি এইটাও দেখলেন যে ছোট ছোট শিশুরা নিজ নিজ ঘর থেকে খুব খুশি মনে দৌড়ে বের হতে লাগলো। তারপর বিমানবন্দরে পৌঁছে সুরক্ষা সম্বন্ধিত পরীক্ষা নিরীক্ষা সেরে নিলেন। কবির মা ঠিক কয়েক গজ দূরেই দাঁড়িয়েছিলেন। কবি আবারও ওনার মার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মার চেহারা অনেকটাই সাদা হলুদ বর্ণের হয়ে আসছিল, অনেকটাই যেন শীত ঋতুতে অন্তিম লগ্নে চাঁদকে দেখা। কবিকে এক পুরানো দিনের ব্যথা ভরা স্মৃতি খুব নাড়া দিল। ছোটবেলায় যখন কোনো এক অচেনা ভয় শিহরিত করত, ঠিক অনেকটাই এরকম ভয় যেন আবারও সেই সময়ে কবিকে ভয়ার্ত করে তুলছিল। এত কিছুর পরেও কবি তাঁর মাকে কিছুই বলেননি, শুধু এতটুকুই বললেন, আমি খুব শীঘ্রই আবার দেখা হবে। আর সাথে আরেকটি বিশেষ কাজও করলেন, তা হলো শুধুই হাসতেই ছিল আর হাসতেই ছিল। दोस्तों, चलिए अब इस कविता को हम हिंदी में समझने की कोशिश करें। माय मदर एट 66 शीर्षक कविता जो जाने माने कवि कमला दास ने लिखा था, वो वहां अपने जीवन की किसी खास एक अनुभूति को वर्णन करती है या मानवीय संबंधों का एक साधारण विरोधाभास उभर के आए। वक्त था शुक्रवार की एक सुबह। कवि ने अपने माता पिता की घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर निकल पड़ा। साथ थी कवि की मां, ठीक उसी बगल वाली सीट में। मां की आयु तब थी 66 साल। गाड़ी में सफर करते हुए कवि ने मां की तरफ सिर घुमाया। मां उस वक्त ऊँघ रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था, इसी तरह। चेहरा भी इतना पीला था जितना किसी मृत व्यक्ति का। इस दृश्य ने कवित्री एक पीड़ापूर्ण अनुभूति दिया और यह भी एहसास दिलाया कि मां अधिक देर जीवित नहीं रहेंगी। जो भी हो, तुरंत ऐसा भावना से कवित्री ने अपने को बाहर निकाला। उसने सड़क के किनारे उगे छोटे छोटे पेड़ों को देखना शुरू कर दिया जो तेज भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने बच्चे को अपने घर से बाहर खुशी में भागते हुए देखा। उसके बाद कवित्री ने हवाई अड्डे पहुंचे, वहां सुरक्षा जांच करवाए। उनकी मां कुछ गज दूरी बाहर खड़ी थी। उसी बीच ऐसा ही कुछ दूर से कवित्री ने अपने मां की ओर देखा। तब भी मां का चेहरा पीली सफेदी ही था। यह पीलापन शीत ऋतु के अंतिम दिनों में चांद का पीलापन जैसा ही था। कवित्री को अपने शरीर में एक पुरानी जानी पहचानी पीड़ा सी महसूस हुई। अपने बचपन वाली पीड़ा कवित्री को खास याद दिलाया जब उस पर कोई भय छा जाता था। यही सब महसूस करते हुए भी अपनी मां से कोई शब्द ना कहा। तब एक ही बात उसने कही थी, अम्मी तुम्हें फिर दोबारा जल्दी मिलूंगी। उस वक्त कवित्री ने सिर्फ मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही।
बगैर मुस्कुराना और कुछ नहीं किया. So, dear friends, it's time to take a few questions from the extract below. And please do remember, it's a simple one. I would like to provide more in the coming days. Alright? Sample questions with answer. Read the extract given below and answer the questions that follow. But soon put that thought away and looked out at young trees squinting, the merry children spilling out of their homes. Question A. What thought did the poetess drive away from her mind? Answer. The poetess put a thought to her impending death. Question B. What did she see when she looked out of the car? Answer. She saw squinting trees, happy children coming out of their homes to enjoy themselves. Question C. How do you know that the joyful scene didn't help her drive away the painful thought from her mind? Answer. The poet looked again at her mother's face and experienced the old familiar ache. Question D. What does the phrase trees squinting signify? Answer. The phrase trees squinting signifies time which is passed at a fast pace.